Welcome to Beyond Classroom program, and today's discussion is Budget 25-26 and our analysis will focus on UPSC requirements. For the discussion we have the economics faculties of Next IAS, Mr. Vibhas Jha and Mr. B.K. Reddy. And दोस्तों मैं हूँ बी सिंह. Let us trace the importance of the budget for the exam, क्योंकि UPSC इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बजट की क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस 2025 में क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है बजट से. So today's analysis will focus to the UPSC requirement, but at the same time we will try to understand the provisions in the budget which are useful to the common people. Taxation में क्या changes है, reforms क्या होने वाले हैं, and there are several new initiatives which we are going to discuss. Pros and cons, मतलब इस बजट में क्या कमियां हैं वो भी बात करेंगे. It was 1860 जब बजट की स्टार्टिंग हुई इंडिया में. इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा और कन्वेंशनली बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट डे ऑफ द फरवरी. ऐसा चलता रहा. 1924 में पहली बार रेलवे बजट अलग से रखा गया. दैट वॉज ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर दैट टिल 1999 दिस कंटिन्यूड. वही ब्रिटिश रूल फॉलो होते रहे और वैसा ही सिस्टम चलता रहा. 1999 में फिर जो बजट आया वो शाम को 5 बजे आया और वही पैटर्न जो ब्रिटिश पीरियड से हो रहा था कि शाम को 5 बजे बजट रखा जाता था फरवरी के लास्ट डे को. 1999 में जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर बने, पहली बार उन्होंने बजट रखा 11 o'clock. तो हमारे इंडिया के टाइमिंग में 11 o'clock को बजट रखा गया. फर्स्ट टाइम इट वाज 1999. हिस्टोरिकली बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट डे ऑफ फरवरी, बट फर्स्ट टाइम ऑन दिस वॉज द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 जब अरुण जेटली जी ने बजट को 1 फरवरी को रखा एंड दिस इज स्टार्टिंग इन 2017. फाइनेंस मिनिस्टर्स बदलते गए, बजट की परंपरा चलती गई, लेकिन कुछ चेंजेस होते गए. आज के बजट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इससे क्या क्या चीज़ों का प्रोविजन है एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द students and especially those who are preparing for the UPSC examination. तो मेरा पहला सवाल विभास जी आपसे है कि जैसे बजट में हमने देखा कि एक तो जीडीपी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? इसी कंटेक्स्ट में ये बजट आया है. एक तो मैं 2 चीजें इसमें बोलूंगा. तो एक तो यही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन हाई है. साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी का नंबर इस बार बहुत अच्छा नहीं आया सेकंड क्वार्टर का, 5.4%, विच वाज मच बिलो एक्सपेक्टेशन. तो उस कंटेक्स्ट में जब ये बजट आया, मैंने ये देखा कि एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस बजट में, टू बिगिन विथ, जो बुरी लगी वो बाद में बोलूंगा, लेकिन जो अच्छी लगी वो ये लगी कि जो इनका एक थीम है सरकार का, ज्ञान, दैट इज गरीब, युवा, अन्नदाता, फॉर फार्मर एंड नारी, विमेन. तो ज्ञान थीम पर बजट आगे बढ़ा है. ये पिछले 2-3 बार के बजट से ज्ञान पे बात चल रही है. तो उसमें क्या है, साथ में बजट में 3 कोशिशें देखी गई हैं, अभी हम लोग विस्तार में चर्चा भी करेंगे. एक, टू प्रमोट कंजम्पशन ग्रोथ, टैक्स विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, सभी लोग बात कर रहे हैं. तो उससे ये होगा कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को भी थोड़ा एक बल मिलेगा. सेकेंड, बजट में बात हुई है एग्रीकल्चर पे, नॉट ओनली इन टॉकिंग अबाउट सब्सिडी टू एग्रीकल्चर. मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट दिस टाइम दे हैव टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है फूड प्राइस की वजह से, वो थोड़ा कम होने की संभावना है. और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए बात हुई है कि अपने एमएसएमई को बढ़ावा दें, अपने यहाँ पे प्रोडक्शन की कोशिश करें. जैसे हमारे यहाँ टॉय, फर्नीचर, अब ये चीजें हमारे यहाँ बननी चाहिए. हम चाइना से क्यों खरीदें? हमारे विष्णु जी, हमारे गणेश जी चाइनीज बना के बेच रहे हैं तो वो क्या फायदा है? तो ये इस बार बजट ने पहली बार कोशिश की है, बहुत दिनों बाद ये कोशिश ये किया जाए. तो मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव आउटकम्स तो हैं. इस बजट में जो एक चैलेंज दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको टैकल करने के लिए इस बजट से कुछ मिलता है? हाँ, देखिए, एक तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे काफी ध्यान है. देयर इज टॉक अबाउट टेक्सटाइल एनहांसमेंट. तो टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, एमएसएमई इन जनरल, साथ में टॉयज, ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं. बट मेरा एक निराशा रही मुझे, पिछले बजट में काफी स्कीम्स लॉन्च की गई थी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स. अगर उनको थोड़ा और विस्तार से बढ़ाया जाता है इस बजट में, कुछ और बात हो जाती, उन पे थोड़े और पैसे दिए जाते उसके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता. लेकिन स्किलिंग पे भी बात है, ये एक अच्छी बात है कि द टॉक इज ऑन स्किलिंग एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो ये दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन होंगे.
जो ये स्टेप्स लिए गए हैं इनको आप यूपीएससी के लिए कैसे देखते हैं कि हाउ दीज स्टेप्स विल बी यूजफुल फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम, स्पेशली इंटरव्यू? करेक्ट. फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पार्ट शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विथ ऑल द मेन थीम्स ऑफ बजट. जैसे इस बजट में पहली बार उन्होंने अनाउंस किया दैट व्हाट डू दे मीन बाय डेवलप्ड भारत. तो फाइनेंस मिनिस्टर की डेफिनेशन है दैट वी विल टॉक अबाउट डेवलप्ड एग्रीकल्चर, developed industries, promoted skills, productivity enhancement and inclusive growth. तो उन्होंने कहा ये अगर होगा तो ये डेवलप्ड भारत है. इंसिडेंटली अब जो इंटरव्यू के हमारे बच्चे हैं वो देखेंगे भी कि मैंने इंटरव्यू का जो वीडियो लिया था आज से 1 महीने पहले करीब, उसमें यही 4-5 टेम्पलेट रखे थे कि ये डेवलप्ड भारत. बट उनको ध्यान रखना चाहिए. दूसरा, बजट में जो डेफिसिट के नंबर्स हैं और इंटरव्यू बोर्ड उनसे पूछ सकता है दैट 3 थिंग्स यू लाइक्ड अबाउट द बजट, यू डिड नॉट लाइक अबाउट द बजट. अब वो हम आंसर देंगे आज के सिस्टम में. रेडी. निर्मला जी ने during her speech she used some phrase of Telugu, and she talked like country is about the people, not about the soil. So exactly what was this and what was the context of this phrase? Sir, there is a great Telugu poet, sir, Gurujada Venkata Apparao. He is a first writer in Andhra. He wrote about the national patriotism and women empowerment, and he gave this word, sir, desam ante మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులు. मतलब देशम means sir country. Country means not about its land, it's about its people, sir. So if you see the current government, they have a very good vision for the by 2047 they want to make India Viksit Bharat, sir. There is a lot of correlation with the poet Gurujada Venkata Apparao. The current budget says we want zero poverty by 2047, sir. Right. Number 1. Number 2, 100% education sector. Education should be improved, 100% literacy. 100% health sector should improve, sir. 70% of females should participate in the labor force, 70%. And most importantly, sir, the youth, right now if you see India's demographic dividend, they should participate in quality jobs. And the farmer, Annadata, should become food basket of the world. So the vision for this budget is based on that philosophy of Venkata Apparao, that is called country is not about its soil, it is about the people. That is the background for the current budget. The theme for the current budget is based on his quotes, sir. Very good, very nicely explained. Friends, there are the 5 different parts of this budget which we will discuss today. One is agriculture sector, second is MSME sector, third is investment sector, export, and finally the tax proposals. इसमें एक एक करके इसको सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड उनके प्रपोजल्स, उनके जो फीचर्स हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टेप लिए गए हैं एंड क्या प्रोविजंस हैं इस बार के बजट में? करेक्ट सर. सर इसमें एक बात मैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बता दूं दैट 46% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इन एग्रीकल्चर एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर. करेक्ट. तो ये बहुत जरूरी है. एक इसमें अच्छी बात ये भी है दैट मैं स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा दैट वी शुड नॉट सी द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर गिवन ओनली इन दिस बजट. पिछले 2-3 बजट से लगातार बात हो रही है, जैसे स्कीम्स लाइक पीएम प्रणाम जहां केमिकल फर्टिलाइजर कम करने की बात हुई, या फिर स्कीम्स रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. तो एक वो चीज है. अब इस बजट में सबसे अच्छी जो एक चीज है वो धन धान्य कृषि योजना. इसकी एक बात की गई है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, कवरिंग ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स एंड हेल्पिंग देम विथ टेक्नोलॉजी, गुड क्वालिटी सीड्स, गुड क्वालिटी इरिगेशन फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्रॉप टू ग्रो. अब ये सबसे जरूरी है. हम किसान को किसी भी एमएसपी से उतना रिच नहीं बना सकते जितना उनके प्रोडक्टिविटी जस्ट कन्वर्टिंग इट इन हिंदी, ट्रांसलेटिंग इट उत्पादकता. तो अगर उत्पादकता बढ़े तो अपने आप आय बढ़ती है. राइट. और हमारे पास जमीन मान लीजिए जैसे आज चाइना है हमसे आधी जमीन इस्तेमाल करता है और हमसे आधे लोग हैं उनके पास कृषि में, लेकिन हमसे डबल उत्पादन है. तो ये उत्पादकता कर सकते. तो आप सोचिए सर, इफ हाफ ऑफ द पीपल आर इन एग्रीकल्चर, आज 46% अगर वो 23% हो जाए और एग्रीकल्चर डबल इनकम आज का कर ले तो चौगुना इनकम बढ़ जाएगी जो लोग एग्रीकल्चर में होंगे. एक और चीज जो की गई है वो है दैट इनहैंस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड. राइट. इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. 7.7 करोड़ फार्मर्स आर कवर्ड थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड और अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख फिशरमैन आर कवर्ड थ्रू इट एंड 35 लाख डेयरी फार्मर्स आर कवर्ड थ्रू इट. इसमें कहा गया है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दी गई है. इसका एक बेनिफिट क्या होगा कि जो किसान, स्पेशली जो मध्यम वर्ग का किसान है जिसके पास 4-5 एकड़ की जमीन है, वो मनी लेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा टू परचेज देयर इनपुट्स. इसी
मैं इस बजट में इस बार बिहार की बहुत बात हुई। हाँ। और स्पेशली बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाने की बात बात कर रहे हुई हैं। तो एक्चुअली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मखाना बोर्ड क्या है और इससे कैसे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी? करेक्ट सर, ये मखाना जिसे फॉर आवर इंग्लिश फॉलोइंग स्टूडेंट्स फॉक्सनट बोलते हैं उसे इंग्लिश में। मखाना से सर क्या है, एक तो बिहार में देयर इज इमेंस स्कोप, स्पेशली वेस्टर्न बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, तो मखाना की खेती बहुत ज्यादा होती है वहाँ। मखाना बोर्ड से फायदा ये होगा, जैसे हमारे यहाँ जब हम इंडिपेंडेंट भी हुए थे तो कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, तो बोर्ड क्या करता है दैट एक डायरेक्शन बनाता है रेंजिंग फ्रॉम द इंटायर सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, खरीदा किससे जाएगा, देन स्टोरेज, देन प्रोसेसिंग एंड देन सप्लाई टू द मार्केट। बोर्ड ये भी करेगा कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्केट करेगा, इनफॉर्मल हो जाता है नहीं तो इनफॉर्म। अभी मखाना की खेती बिहार में, और मैं तो बिहार से हूँ हमारे तो मतलब शाम का खाना मखाना ही होगा बहुत कॉमनली। रेड्डी जी, इन एग्रीकल्चर सेक्टर दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द आत्मनिर्भर भारत pulses and all. So what is your observations on the agriculture sector? Sir, if you see our fundamental flaw in our agriculture sector, lack of crop rotation, sir. Mostly we are heavily dependent on paddy and wheat. Right. It's called rice and wheat economy of India traditionally. So government is trying from last 2 to 3 budgets, they want to shift to the crop rotation, sir. Number one. Number two, it will increase the productivity. Number three, sir, right now we are heavily importing pulses, edible oil, etc. Now we want to less dependent on imports also. Number four, sir, the consumption basket of Indians is changing, sir. Now people are taking more protein, so there is a demand is going to increase for pulses. Right. So that is the another one thing, sir. One I want to add with Vibhasa one point, sir. Last year they told turmeric board in Telangana, sir. Now students, we have to study current budget, but tomorrow what they can ask in prelims, no? They can keep the which of the following statements correctly matched. Turmeric board, for example, Telangana. For example, Makhana board in Bihar announced. So like that they can match the following and they can ask also. Students should focus on not only the Makhana board, but like also the other boards. Other boards. That is. सर और उसमें ऐड करूंगा that in pulses they are focusing on tur, urad and masoor. These three most demanded pulses in India. उसका एक और कारण है, मैम, हम जब 10 जनवरी को हमने एक बियॉन्ड क्लासरूम किया था, वहां भी डिस्कशन किया था कि हम बहुत सारे फ्री मनी दे रहे हैं अभी अपने इकोनॉमी में, विमेन एंड सो ऑन, उससे जो इनकम बढ़ेगी, द डिमांड विल राइज फॉर पल्सेस, एग्स, मीट, एडिबल ऑयल, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ाने की जरूरत है। अब हमारे यहाँ 27 मिलियन टन पल्स प्रोड्यूस होता है, बट 31 मिलियन टन कंज्यूम होता है। सो अब सरकार की यह चेष्टा है दैट नेक्स्ट 5 to 7 years वी विल मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन पल्सेस, मेनली तुर, उड़द एंड In previous budgets, we have seen that government used to come out with some infrastructure projects related to the agriculture. For example, this was a Cane-Betwa interlinking project, which helps the farmers as well. But इस बार के बजट में हमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई मेगा प्रोजेक्ट या उसकी मेगा प्लानिंग नहीं मिलती। So, do you find anything which is the futuristic plan in the agriculture or allied sector? Sir, two things I find in them. एक सर, just taking your question that in infrastructure में इसलिए नहीं मिल रहा because we have, I think we are already over invested in it. So existing program को complete करें तब नया announce करें, that's a good thing. That otherwise we have announced so much. Let us see if we can complete it. Okay. इसमें एक information भी students को देना चाहूँगा that 5 years ago we had announced agriculture infrastructure development fund. 1 lakh crore rupees का fund था वो. 41,000 crore is already now operational. So we are doing some progress there. वो post harvest infrastructure का है. इसमें दो चीजें देखता हूं सर मैं जो मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक है. वन इज दैट देयर इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. दे हैव सेड 5-year मिशन जिससे कि प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग बढ़े. लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसकी डिमांड होती है फॉर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल बेस्ड कॉटन, उसके लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की एक तो बात है. एंड सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, बिकॉज इंडिया में सीड प्रोडक्टिविटी की बड़ी कमी है और हम लोग सब लोग जो हैं हम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से ही हैं. तो हमें पता है दैट अगर बीज गड़बड़ होती है तो फिर सारी चीज गड़बड़ हो जाती है. Right. इसमें एक और चीज है, पिछले बजट में वो बात थी सहकारिता बनाने की, कोऑपरेटिव्स टू डेवलप सीड्स एंड कोऑपरेटिव्स टू डेवलप मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर. तो आई थिंक अगर उस पूरे कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो देन इट इज अ वेरी गुड, दे आर वेरी गुड पॉइंट्स दैट वी लुक एट इन द बजट. Okay. Sir, I want to add one point, sir. Right. In agriculture, right now, government want to use Indian postal ecosystem, sir. If you see India, since independence, pre-independent also, the postal we have good, very good network, but we are unable to utilize them properly, sir. After the 2015 onwards, we gave the payment bank status to them. Now the Indian postal become like a catalyst, sir, for rural economy. For example, now they can use as a logistics hub, sir.
They can take insurance also, storage facilities. Indirectly, government want to use this postal ecosystem to transform the rural economy so that they can access the semi-urban and urban areas also, so that it will improve the farmers' income as well as overall rural economy will boost, sir. This year we have seen that government has a special focus on the middle class. Yes, sir. And micro, small and medium enterprises. This is one area where most of the middle class people are working. And government has announced some initiatives related to the classification has changed and the funds for the startup has been set up and some additional advantages. So what is your observation on this budget for the MSME? Sir, I want to tell one secret here. That is not secret, everybody knows. There is a concern after the pandemic. The micro, small, medium enterprises are suffering, sir. Right. After the Atmanirbhar policy, government revised the definition of MSME, so that more micro, small, medium enterprises will come under the benefit of the government schemes, sir, like credit guarantee schemes, etc. Now, in the current budget, sir, the investment limit increased to 2.5 times of existing limit. The turnover also doubled, sir. Doubled. So that more existing people benefit. More MSMEs will continue the get the benefits of the government schemes, sir. Number one. Number two, sir, if you see MSME sector, they play very important role in contribution to our exports, contribution to GDP growth rate, and mostly they are labor intensive, sir. Correct. So when it is the labor intensive, it will create lot of jobs. That is the reason government facing these concerns last few years, like exports concerns, jobs concerns. Then there is a inequalities between the rich and poor also. So government want to address these challenges by supporting the MSME sector. That is the most important aspect in number one announcement in MSME, sir. Vibhas ji, in this budget there is a special focus on the footwear and the leather industry. Yes, क्या इसके पीछे कारण है कि why this time we have seen the special announcement for this sector? Correct, sir. In fact, मेरी क्लास के स्टूडेंट मुझे आज मैसेज भेज रहे थे कि सर आपकी बात सुन ली सरकार ने, बिकॉज हम PLI ला रहे थे सर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एंड इन PLI व्हाट वी वर डूइंग वाज वी वर मेनली फोकसिंग ऑन मोस्ट ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, से फॉर एग्जांपल्स ऑन ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स. इस बार अब ये एम्प्लॉयमेंट एक इशू तो बन ही रहा है इंडिया में. करेक्ट. तो हम लोग ने इस बार क्या किया, दैट देयर आर 3 मेजर सेक्टर्स दे हैव टारगेटेड. वन इज टॉय. तो टॉय इंडस्ट्री पे उन्होंने कहा है that we will develop clusters मतलब गुच्छे. So there will be group of industries developed जहां पे स्किल भी डेवलप करेंगे, लोन भी देंगे और टॉय का प्रोडक्शन करेंगे. चाइना एट द मोमेंट इज द लीडिंग सेक्टर इन टॉय, बट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स. हमने ये शो भी किया है, हमारे टॉय एक्सपोर्ट्स भी बढ़े. दूसरा उन्होंने ध्यान दिया है फूड प्रोसेसिंग पे. इसमें एक और बिहार के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है दैट देयर विल बी अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, व्हिच विल बी फॉर फूड प्रोसेसिंग. और बिहार में सर पूरा बेल्ट है. अगर हम देखें हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस तरफ फ्रूट्स ग्रो अ लॉट, बनाना, गुआवा, या अगर हम देखें बेगूसराय लीची, और अगर हम देखें बेगूसराय वगैरह की तरफ, बेगूसराय एंड कनेक्टेड फीचर मोकामा, तो वहां पे चिली वगैरह की खेती होती है. तो फूड प्रोसेसिंग कैन बी डेवलप्ड इन प्लेसेस लाइक बिहार. फिर वेस्टर्न चंपारण अगेन. सो देयर आर प्लेसेस व्हिच कैन बी डेवलप्ड. और तीसरा उन्होंने अनाउंस किया है जो बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है, दैट फोकस स्कीम फॉर फुटवेयर प्रमोशन. और इसमें भी एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन की गई है, जो बहुत अच्छी बात है, दैट देयर विल बी मनी गिवन फॉर नॉन लेदर फुटवेयर. बिकॉज अब वर्ल्ड मार्केट जो है सर वो दैट हैज शिफ्टेड टू नॉन लेदर फुटवेयर. लेदर फुटवेयर इंडिया बहुत प्रोड्यूस कर रहा था. करेक्ट. अब इस स्कीम में उन्होंने कहा है दैट दे विल गिव that this scheme will promote employment for 22 lakh people and generate turnover of 4 lakh crore, और इसमें से 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट होगा. सो दैट इज, क्योंकि ये इंडिया का ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग. तो मुझे लगता है अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. MSME पे एक बात और इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको 5 लाख रुपीस तक का क्रेडिट दिया जाएगा विदाउट कोलैटरल. और इनमें फोकस किया जाएगा ऑन विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब. सो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द स्टैंड अप माइक्रो टाइप इंडिया प्रोग्राम. स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड किया गया फॉर अनदर 5 years. और एक चीज और मैं बस एक्सपैंड कर रहा हूँ, रेड्डी सर बता चुके हैं, बस स्टूडेंट की सहूलियत के लिए, कि जैसे पहले था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस विल हैव 1 crore rupees ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट. नाउ इट इज 2 crore, डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट. और 5 crore का अगर टर्नओवर था, इट इज 10 crore, डबल ऑफ. राइट. एंड द ड्यूरेशन also has been extended to 5 years. हाँ, ड्यूरेशन ऑफ 5 years has been extended. Now if you are establishing yourself for 5 years, you will be allowed to get till 2030. Right.
Reddy ji, there is one term which talks about the national manufacturing mission. Yes, sir. So what is this national manufacturing mission और क्या इसका objective है? Sir, again, sir, the fundamental philosophy after 2014 onwards, we cannot grow without manufacturing strong base, sir. So we want to make for India, make for the world right now. So indirectly, it is a kind of extension of our Make in India PLI program. But here special focus given to the micro, small, medium enterprises, sir. Number one. Number two, right now, as sir told, focusing specific sectors like toy sector, etc. It is a macro mission of the government to make improving the manufacturing sector to the GDP, to create more jobs, to increase our exports, to attract more FDI also, sir. Coming on to the same context, recently the Trump government has, they have been talking about the increasing the tariff and the reduced duties on the import, especially from the China. Do you see this initiative of the government of India to promote the MSMEs toward that there will be a future opportunity for the India to grow more in the manufacturing sector, because चाइना से अगर लोग भागते हैं तो इंडिया में आने के चांसेस हैं? सर, इसमें तीन चीजें को क्विकली मैं आपको बताता हूँ. तीन फैसेट है इसके. ट्रम्प्स imposing tariff on China. Number one, very correctly said, people will come from China to India. So if we are developing our manufacturing sector better, especially MSME, और वही फिर यही sectors, toy, food processing, and so on, तो एक तो ये benefit है. Second, MSME are also component suppliers to many big industries. Correct. So if MSME are promoted, big industries will also get supported by the supply chain establishment within India. जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हो गए, तो वहां भी ये बेनिफिट होगा कि ये चीज जाएगी. और तीसरा फैसेट है दैट अगर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं इंडिया पर भी, इट्स पॉसिबल 5% एक्स्ट्रा, 10% देयर इज एप्रीहेंशन. तो अगर हम इनको यहाँ सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट आवर एमएसएमई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया फॉल्स. अब एक मिनट के लिए पहले मैं कुछ 100 रुपीज का बना रहा था, बेच रहा था, 10% टैरिफ लगेगी, वो 110 का हो जाएगा. अगर मैं 90 रुपीज कर दूं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने देश में ही, तो 10% टैरिफ लगने पर भी वो 99 का होगा, विच विल मीन आवर प्रोडक्ट्स विल स्टिल बी कॉम्पिटिटिव. So if Trump proposes the tariff on Indian goods also, तो what do you see the China और India, ये दो major countries से फिर लोग कहाँ जाएंगे? Do you see Bangladesh and Vietnam? Sir, I always say this, that I never see a Bangladesh or a Vietnam having that much traction that they can produce as much as we can if we want. अब वो ये बहुत बड़ा है if we want. that अगर हम चाहें तो उनसे बहुत हम 10 गुना 20 गुना ज्यादा बना सकते हैं. So the volume can be generated only in India. प्रोवाइडेड अगेन, तो इसमें इस बजट में कुछ वेलकम चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, मुझे उम्मीद है आगे के बजट में आ जाएंगी. बट इस बजट में कुछ चीजें नहीं है, जैसे आई वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट कैन फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन लेबर लॉ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन, या लैंड एक्विजिशन के लॉ को थोड़ा आसान बनाया जाए, या क्रेडिट को आसान और बनाया जाए, नॉट ओनली फॉर एमएसएमई बट फॉर इवन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इनकी अगर कुछ बातें होती तो और अच्छा होता, बिकॉज पीपल विल कम टू इंडिया. अगर ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, हमारे पास एक और बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है वो यूज कर सकते हैं. दैट्स अ सजेशन आई वुड लाइक टू गिव. देयर आर फ्यू कमोडिटीज लाइक कैलिफोर्निया आलमंड्स और हार्ले डेविडसन. अब ये ऑलरेडी कॉस्टली चीजें हैं, इंडिया के अमीर लोग ही खरीदते हैं, और हमारा टैरिफ कलेक्शन इस पे बहुत लो है. वी आर इम्पोजिंग 50% 75% टैरिफ ऑन दिस. वी कैन नेगोशिएट विद देम बाय टेलिंग देम, देखिए इस पर हम टैरिफ कम कर देंगे, आप हम पर मत लगाइए, आप हम पे मत लगाइए. तो मुझे लगता है दैट कैन हेल्प ऑल्सो. दोस्तों, जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द बजटरी प्रोविजंस फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. आपके माइंड में क्या सवाल हैं, यू कैन पुट इन योर कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू टेक योर क्वेश्चंस एंड डिस्कस ऑन दिस डिस्कशन. इन एडिशन, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नेक्स्ट IAS आफ्टर द एनालिसिस एंड विद इंटेंशन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, प्लीज डू रिक्वेस्ट इन द our comment box. आप comment में लिखिए, our team will send to you. Now coming to the investment sector, human resource is the one area where the India is very efficient, quality wise, quantity wise, and so on, whether it is the professionals or not. Government is in budget, they are talking about the increase in the capacity of the IITs and also in the medical sector, a number of the vacancies or number of the seats of the medical colleges to be increased. How do you see the investment sector in this budget? Sir, for any country the GDP depends on consumption, sir. One is investment, government expenditure, exports minus imports, sir. Right. So the four drivers: consumption, investment, government expenditure and exports, sir.
So investment is a key driver, sir. Now the question comes, where should we invest? Should we invest like physical infrastructure? So now, as I told starting, sir, country is not about the land, it is about the people. So number one focus in the investment in the current budget is investing in the people, sir. Now, number of IITs they improved, sir. Now they want to increase the existing infrastructure like hostels, number of seats increasing, number one. Number two, sir, medical colleges. So as you see, sir, right now students have aspiration in India, they want to become a doctor. So but in India, medical cost is very high in private colleges. They go to countries like Kazakhstan, Ukraine like places. Now government want to increase the number of medical seats in upcoming 5 years also. Right. Number two. Number three, sir, they want to set up one institute for artificial intelligence also. Now China, America, lot of countries investing a lot. Number three. Number four, sir, the Anganwadi worker. And if you see the most important aspect of the current budget, sir, even though we didn't implement labor laws, talking about the gig workers, sir. Now they will create a platform, sir. You can register with that portal, and government want to give the Ayushman Bharat card there, that is under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And most importantly, sir, broadband connectivity to our all government secondary schools, sir. Now if you see, sir, those schools have a internet connection. Let's say they're explaining some topic, they can use internet, they can get better visualization, memory power will improve, etc. And sir, there's one important thing, Bharatiya Bhasha Pustak scheme, sir. Right now, if you see the understanding capabilities of the students, if you are studying mother tongue, sir, your understanding level will be different. So every student in our country should at least learn one mother tongue so that he can improve his capabilities, mental abilities, etc. Government want to create a digital library in the local languages, books, etc. And Atal Tinkering Labs also. So this scheme is a very nice scheme, sir. Niti Aayog is implementing. In schools, rather than just giving some facts, some data, we want to give them ideas, like think tanks and IITs. So they can give an idea, prototype. They can ask how to solve the problems in rural agriculture, for irrigation, micro irrigation, so that students can give different ideas also. So if it's overall in the current budget, they are spending proper time and proper investment in the human capital, sir. अभी जो रेड्डी जी ने बताया IITs, 23 IITs having around 1,35,000 seats as of now. In general, country as a whole has more than 10 to 11 lakh seats for the engineering graduates. And we see that many of the engineers, they are not able to get the employment of good quality. How do you see increasing the professional vacancies and increasing the number of seats? Will it really help to the nation? And if yes, how this human resource development will help in doing ease of business? Like ease of business is again a target of the country. Sir, again, when we are talking about human resource development, what we should keep in mind is that there is a fourth industrial revolution going on, and we have to prepare our human resource for that. So now if we are developing engineering seats, IITs of course can be the focus, but there should also be focus on regional engineering colleges, on national institutes of technology, and also on other engineering colleges. Even private engineering colleges should be given a standard format in which they train the students. Right now we see that the question papers are predictable, and the syllabus is predictable. So students have very less incentive to study well. If we can change this, now how do we change this? We can change this by creating employment opportunities. So where will the employment opportunities come from? So one can be with semiconductor development. We will need engineers who can do that. Another again, toy, footwear. You need designers who can do that. Another can be civil engineering, where there is a lot of scope in India. Construction mein hum log abhi bhi kafi piche hain, so we have to go a long distance in that. Another feature can be mechanical engineering, automobile. Another will be chemical engineering, like making dyes, making detergents, making soaps, and colors and so on. तो इन चीजों को अगर फोकस में डाला जाए और इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को एक साथ लाया जाए, that the teachers in the college and the industrial requirement, if they are brought together, तो हम लोग भी सर इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत बार देखते हैं that the student has the degree, but the challenge is in implementation. This is what I wanted to. So there are many students who are engineer by degree but not by knowledge. Not by knowledge. Actually, there is a need to strengthen the infrastructure, academic infrastructure, digital infrastructure, and mechanical infrastructure, and physical infrastructure among the engineering colleges itself, and get the good educated engineered candidates who are actually engineer by knowledge. And उसमें एक चीज और भी है सर, the second thing that you asked, that how do we make it easier to do business? So country, as Reddy ji also said, country is always people.
अब इस रूम में देखिए सर, अगर हम कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें, कितना भी बढ़िया सिस्टम बना दें, बट हम 3 लोग जो बोले और हमें सुनने वाले जितने लोग हैं वो जो सुने, उसी में से डिपेंड करेगा that कि इसका असर क्या है। तो it is important that the country should be more about people and if we can develop this, we can develop it much better. एक और चीज भी इसमें की जा सकती है about developing energy based sectors, that atomic energy, mineral based energy, और उसमें बजट में है भी प्रावधान। यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि गवर्नमेंट हैज प्लान टू गो फॉर दी 100 gigawatt power production based on the atomic energy. Right. When the entire world is talking about the green energy, we are talking about the atomic energy. What is the reason behind it? राइट सर, मैं सर एक चीज और आंसर करके फिर इस पे आता हूँ। इन सभी चीजों के अनाउंसमेंट के बावजूद जो एक चीज ने मुझे निराश किया, वन थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी वाज आवर बजट ऑन एजुकेशन लास्ट ईयर वाज 1,25,000 crore. दे कुड स्पेंड ओनली 1,14,000 crore. समबडी शुड लूज जॉब फॉर दिस. किसी की नौकरी जानी चाहिए कि भाई कम क्यों खर्च हो रहा है। और ये हर साल की कहानी है सर, एवरी ईयर द बजट एंड 10,000 crore लेस इज स्पेंट. This year the budget is 1,28,000 crore. Now we are focusing on human resource development and we are increasing education budget by not even 5%. I think then we have some. और ये तो तब खर्च हो रहा है जब फ्री की बहुत सारी स्कीम है। जब फ्री की स्कीम से अगर वो स्कीम खत्म कर दें, यस, अच्छा इसमें भी बहुत सारा खर्चा सैलरी पेमेंट पे है, सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। सेकंड सर, कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, सो व्हाट्स हैपनिंग इज एट द मोमेंट इंडिया हैज 92 गीगावाट. अब ये बढ़ भी जाएगा फ्यूचर में, द लेटेस्ट डेटा विल कम ऑन 31 मार्च, बट मैं 31 दिसंबर का डेटा बोल रहा हूँ, दैट 92 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी. तो already in solar energy we are doing well, and we are going to touch 100 gigawatt as said by the Minister of Renewable Energy by end of this year. In wind energy also we are touching almost 50 gigawatt, 48 gigawatt पे तो आ गए हैं. तो in renewables that place we are doing well. सेकेंड जो चीज है, न्यूक्लियर पे इसलिए जा रहे हैं, वी हैव कम टू 8 गीगावाट. इंडिया का पोटेंशियल है 100 गीगावाट, आई थिंक बाय 2047. हाँ, 2047 है. सो द आइडिया इज दैट इफ वी कैन हैव सेफर न्यूक्लियर एनर्जी, देन इट इज समथिंग दैट कैन गिव इंडिया, बिकॉज पोटेंशियल हमारी बहुत ज्यादा है. और मुझे एक ना दूसरा रीजन भी समझ में आता है, बिकॉज द रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर्स लॉट ऑफ द लैंड रिसोर्स. वेरी करेक्ट. And the nuclear energy can be developed and can be produced in a smaller land resource. Second is that the atomic energy at time can be much cheaper than the एक और भी बात है सर उसमें, मैं चीपर का एज एन इकोनॉमिस्ट वो चीपर का कारण बताता हूँ, दैट एक टर्म होता है प्लांट लोड फैक्टर, दैट इफ यू हैव क्रिएटेड अ कैपेसिटी हाउ मच यू कैन यूटिलाइज. तो रिन्यूएबल में क्या है सर, दैट आउट ऑफ 100 मेगावाट 100%, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 25%, 30%. बट इन न्यूक्लियर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैन बी 65-70%. राइट. Reddy ji, would you like to add anything? I want to add one point, sir, very interesting. Right now across the globe there is a talk about green energy, sir. Correct. Like environmental friendly, sustainable development. Right. There is an interesting case study, sir. If you see the Europe and USA right now, whoever focusing on renewable energies, they are heavily dependent on raw materials for China, sir, from China. So right now there is interesting, let's say Europe wanted to focus on wind energy or solar, they are heavily dependent on China for raw materials, sir. For that China use coal energy to produce that raw materials. So there is an inverse relation. Now you are focusing on solar energy, wind energy, indirectly China is consuming more coal, their exports are increasing. That is the reason even Trump government says we should not heavily dependent on only what we call EVs or the renewables, etc. There should be a balanced mix, sir. That is one interesting study. Number two, sir. Drill, baby, drill. Yeah. Number two, sir told that investment in people, sir. One interesting point, economic survey argues how to make our education system more better at higher levels, sir. So up to 10th class, 10 plus 2 feeding, there is a curriculum, it will okay, sir. But after 10 plus 2, college should have a freedom, university should have a freedom, professors should have a freedom, they should talk to the industry, based on the industry they should teach the curriculum. They should not have a rigid curriculum. They teach 8085 microprocessor in 2010 also, 2024 also, sir. One more reason I see for the plan to go for the atomic energy is that we are consuming the land resource. As of now, we are using the wasteland, which is barren, unfertile. But when the demand keeps on increasing, if we are going for more development of the renewable energy,
there will be a situation when we have to go for consuming the fertile land. Yes. That is one. Secondly, there will be a lot of the e-waste. Once all these solar panels will be completing their life cycle after 20-25 years, there will be huge e-waste, and that disposal of e-waste, that will be another challenge. So one more, sir. Even if you see the renewables like solar and wind, one big challenge is that they are seasonal in nature, sir. Let's say you set up, let's say, a factory in a solar energy factory in Kashmir, for example, or some areas like Tamil Nadu for wind. If monsoon is not good, wind season is not good, then our investment we may not utilize in 365 days. So now let us come to the next sector, that is the export sector. India is heavily dependent on the US, because India's major export partner is the US, and now US is talking about the increasing the tariff. So what are the major areas, Bharat Trade Net and other things, which are the initiatives taken? इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा that our exports have already done pretty decently after COVID pandemic. Right. Before COVID pandemic, our total exports had reached $535 billion. This was 2019-20, COVID के एक साल पहले. पिछले 4 सालों में ये बढ़कर $778 billion हो गया है. So there has been a 50% increase in just 5 years. इकोनॉमिक सर्वे ने 2014 से कंपेयर किया है, बट 2014 से 19 के बीच में एक्सपोर्ट बिल्कुल स्टैग्नेंट थे, बट लास्ट 5 years दे हैव डन प्रीटी वेल. नाउ कमिंग टू दिस, इन दिस ईयर्स बजट देयर आर सम बेटर थिंग्स डन. एक तो MSME की हम चर्चा कर चुके हैं, एंड फूड प्रोसेसिंग, टॉयज एंड लेदर गुड्स, फुटवेयर आर ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी बात की गई है, दे हैव रिड्यूस्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मेनी रॉ मटेरियल्स. इसको सर एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज वेयर आई एम चार्जिंग अ वेरी लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड वेरी हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड वेरी लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड्स. उसमें क्या होता है कि लोग रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट करते, सीधा का सीधा फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर लेंगे. अब सरकार ने क्या किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज किया है. We had 23 different import duty slabs, 15 have been removed, now only 8 are left. तो ये इंडिया को सिंक्रोनाइज करता है विद द ग्लोबल सिस्टम. एक और चीज जो की गई है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, वो है दैट देयर विल बी सेक्टरल एंड मिनिस्टीरियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट. कि एक्सपोर्ट के लिए जो लोन लेना चाहेंगे उन्हें आसानी से लोन मिलेगा, और सेक्टरल टारगेट होगा, मिनिस्टीरियल टारगेट होगा. और एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया गया है, भारत ट्रेड नेट. इट विल बी लाइक अ यूपीआई काइंड ऑफ अ थिंग. इसमें क्या होगा, दैट एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन. करेक्ट. So if you are an exporter, you have exported once, your documentation is already there. Next time the entire permission you will not have to take. और एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. They are big exporting term. 25 lakh people are today employed in it. Engineers, upper end accountants, economists. ये लोग हैं सर दैट हु आर फ्रंट एंड ऑफिसर्स ऑफ ग्लोबल ऑफिसेज इन इंडिया. जैसे मैकिन्से हो गए, आर्थर एंडरसन हो गए, JP मॉर्गन हो गए. इनके फ्रंट एंड, एक पहले इंडिया को मिलता था कॉल सेंटर का काम, बैक एंड सॉफ्टवेयर लिखने का काम. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आर डूइंग द फ्रंट एंड ऑफिस वर्क. सो नाउ इंडिया इज डूइंग डिजाइनिंग, इंडिया इज डूइंग रिसर्च. सो ऑल दैट इज ऑल्सो मेकिंग वर्क विद इन इंडिया क्वाइट अ बिग बिट. और एक किया गया है फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, कि एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलप की जाएगी, विच कैन बी डेवलप्ड प्रीटी वेल ओवर द पीरियड. Vibhas ji, we have seen that the government has been promoting the electric vehicles in India, and in this budget we are observing that the government has reduced import duties on the lithium ion battery. Correct. How do you see this step? Are we moving towards going for more e-vehicles and phasing out the diesel and petrol vehicles in India? Because this is a big step to reduce the import duties on the lithium ion batteries. In fact, two things done, sir. One good thing is पहले FAME scheme लाए थे ये लोग, that faster adoption of and manufacturing of electric and hybrid vehicles. उसमें सब्सिडी देते थे, but subsidy will never be very sustainable. Now this is a good idea. Reduce import duty on lithium, cobalt, even cobalt paste. Correct. Also, they have said that already last budget they had said 24 critical minerals will be allowed to be imported freely. Now 12 more are added.
तो चाइना का सर 40% सप्लाई चेन पे कब्जा है. एंड अगेन वी आर द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड, एंड आई से इट नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन बट बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट, दैट वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड हु हैज द कैपेबिलिटी टू चैलेंज देम एंड बीट दिस. किसी के पास स्केल है ही नहीं उतना, 100 करोड़ लोग नहीं है वो हमारे पास है. One student has asked शिवांग भारद्वाज, what he is asking कि जितना इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को बता देता है कि इफ द स्टॉक मार्केट इज मूविंग पॉजिटिव इट मीन्स बजट इज गुड, इफ कमिंग डाउन इट मीन्स बजट इज नॉट गुड. So how do you see the symptoms in the stock market going on downside? How this reaction comes? मतलब ये बजट को कैसे देख रहा है मार्केट? सर उसमें अगेन market should never be taken as a judge of the budget. There was a very good budget in India that came in 2004. Market went down that day. There was a very bad budget that came in 2019. Market went up that day. So market उसका एक कारण है सर. Market में not even 15% population of India participates. Market had factored in few things. जैसे मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया था कि थोड़ा इनकम टैक्स बढ़ेगा, मतलब इनकम टैक्स के स्लैब्स बढ़ जाएंगे. ये मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया था, कुछ कुछ बातें लोगों को समझ आ जाती हैं. Then there are global tensions also. आज ही खबर आई कि अमेरिका ने चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगा दिया. तो सर मार्केट उससे भी डरता है. तो ये क्या हो गया चारों तरफ. So budget, if you ask me, market can be not a general decent session on budget. We should not judge it by that. Right. I'm coming now to the next tax proposals. That is one thing which directly impacts every citizen. So what are the changes in the direct taxes? Impact on the consumption, and what are the and also I'll take that question later. Let us first talk about the direct tax. If it's that any budget, sir, generally 1st April to 31st March, how much government is going to get, sir? How much government is going to spend? It's like a vision for a particular financial year. That's called simply budgets, like a advanced planning, sir. If it's the overall budget, there are two things. One is the receipts, that is the praptiya, karcha, expenditure, sir. So if you see the revenue receipts, whenever government is getting some income, sir, without losing any assets, without creating any liability, that is a part of revenue receipts. Like, sir, GST, income tax, capital gains tax, these are all revenue receipts. Then capital receipts, sir, whenever government is getting by losing their assets or by creating some liabilities, like disinvestments, privatization, selling some assets, that's called capital receipts, sir. Now expenditure, when government is spending on salaries, pensions, subsidies, that's called revenue expenditure. When government is spending on assets generation, like construction of schools, hospitals, dams, bridges, capital expenditure. If you see the direct taxes, it is a part of revenue receipts, sir. That is a major source for the central government right now. If you see that, there are doubts in the students also right now. Sir, if up to 12 lakh rupees there is no income tax, then why there is a slab, sir? There are two things students have a clarity. There are two tax systems right now, sir, in income tax as well as corporate tax. Old tax regime, new tax regime, sir. Right. In the old tax regime, you have some tax exemptions, tax benefits you can take, like section 80C, sir. There is up to 1,50,000 you can take. Right. Then health insurance, term insurance, then home loans, etc. So those are following the whole tax regime, sir. The slab system follow up to 4 lakh. There is no tax right now. 4 to 8 lakhs. Then 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, above 24, 30%, sir. 30%. This is the question by Lokesh Kumar, that he says that sir, there is lot of confusion about the tax slab. तो थोड़ा डिस्कशन क्लैरिटी के साथ करिए. सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूं प्लीज. दैट एक न्यू टैक्स regime में भी इट इज दैट इफ यू आर अर्निंग अप टू 12 lakhs then there will be no tax. But suppose if you are earning above 12 lakhs then the tax for you will begin from 12 लाख मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम मोर देन 12 लाख उस पर टैक्स लगेगा. और इसके पहले से भी सर. अच्छा. जैसे मान लीजिए लोकेश, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन दैट इफ सपोज समबडीज इनकम इज 16 lakh rupees, then that person will pay no tax till 4 lakh. From 4 lakh to 8 lakh the person will pay 5%. 8 lakh to 12 lakh 10%, and 12 lakh to 16 lakh 15%. So if someone is earning only 12 lakh, then no tax. And suppose someone is earning 13 lakh, then that is the challenge of the point, that if somebody is earning 13 lakh, then the tax law says that you will not pay any tax obligation extra beyond 12 lakh. Like if I am earning 13 lakh, now I will have to pay 4 to 8, 8 to 12, 12 to 13. Then they say if your tax obligation becomes very high and your income goes below 12 lakh after tax, then we will not impose any tax on you.
जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4 to 8 lakh 5% मीन्स 20,000, 8 to 12 lakh 10% मीन्स 40,000, 12 lakh to say 13 lakh 15% so 15,000. अब इनके टोटल इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा approximately 60,000. Their income after tax will still remain 12 lakh 40,000, which is above 12 lakh. Then the person will get no benefit. The person pays the tax. Okay, suppose someone is earning 25 lakhs. On an average, how much tax saving will happen? At least 1 lakh 25,000. 1 lakh to 1 lakh 25,000 will be the tax saving. But just clarifying again Vishal's question that जो भी लोग ये सोचते हैं कि 12 लाख पर टैक्स नहीं है और फिर 4 लाख से कैसे शुरू हो रहा है, तो रेड्डी सर ने करेक्टली बताया कि एक तो 2 टैक्स स्लैब्स हैं और दूसरा नए टैक्स स्लैब में भी टैक्स रिजीम्स 2 हैं, 2 रिजीम्स हैं, और नए टैक्स स्लैब में भी 4 जो 12 लाख से नीचे कमाएंगे उन पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर कमाया तो फिर टैक्स 4 लाख से ही लगना शुरू हो जाएगा. Sir, simply those income is up to 12 lakhs, sir, who are salaried. For them, simplified system, sir. Let's say, sir, even you have 1 rupees extra, no? Then you have to follow entire slab system. It's like a briefcase, sir. Just how income tax calculated simply. Let's say your income 5 lakhs. ये तो मेरा भी डाउट क्लियर हो गया आज. 5 lakhs income, sir, let's assume. Government's up to this threshold, no tax, sir. But once you cross that income, even 1 rupee extra, you have to file the tax return, sir. One more reason, sir, government wants slowly people should follow new tax regime, sir. So that right now there is a lot of complicated, sir, like you have to show the interest certificate, home loan interest, education tuition fee certificate. They want simplify. लोग ये कहते हैं कि जो पुराना टैक्स रिजीम है अगर उसमें भी दिमाग लगाओ तो 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उन पर भी टैक्स को कहीं ना कहीं बचा लेते थे. बस अब फर्क ये हो गया नए टैक्स रिजीम में आपको दिमाग नहीं लगाना. Yes, simplified, sir. Simplified है. एक और चीज भी की गई है सर जो बहुत अच्छी चीज है इसमें, दैट द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लिमिट्स हैव बीन रेज्ड. जैसे फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम 2.4 लाख टू 6 लाख, इसमें वाइट इनकम बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं. फिर फॉर सीनियर सिटीजन फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख, तो इसमें सीनियर सिटीजन जो ओल्ड एज के हैं अननेसेसरली उनको टैक्स फाइलिंग में दिक्कत आती थी. तो आई थिंक दीज आर, इसको हम ईज ऑफ पेइंग टैक्स का पार्ट मान सकते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या कोई रिफॉर्म्स हैं, जैसे जीएसटी में है, इंपोर्ट ड्यूटीज में है? इंपोर्ट ड्यूटी में तो काफी अच्छे रिफॉर्म्स हैं सर. जैसे मैं बता रहा था, मैं एक बार फिर बता दूंगा दैट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अ ट्रबल पॉइंट. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता था दैट देयर यूज्ड टू बी हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड्स. इसको सरकार करेक्ट कर रही है. नाउ द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड इज आल्सो बीइंग रेज्ड, रॉ मटेरियल इज बीइंग रिड्यूस्ड. तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना ज्यादा एक encouraging होगा. Second thing done is that the number of tariff rates have been reduced. पिछले बजट में 8 रिड्यूस किए गए थे, इस बजट में 7 और रिड्यूस किए गए हैं. ओवरऑल आउट ऑफ 23 tariff rates now we are left with only 8. तो ग्लोबल लेवल पे अब हम मैच करते हैं. Another thing which is done is that government has said that on import duty there will be not more than 1 tax surcharge or cess. नहीं तो मल्टीपल सेस लग जाते थे, मल्टीपल सरचार्ज, द इंपोर्ट ड्यूटी वुड गो अप. सो नॉट मोर देन 1 सरचार्ज और सेस. और एक और चीज उन्होंने किया कि सेक्टर स्पेसिफिक, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, लेदर गुड्स सेक्टर, इनको स्पेसिफिक रख के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया सो दैट आवर एक्सपोर्ट्स कैन बिकम हायर. अभी रेड्डी जी ने तो एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड व्हाट आर दी एक्सपेंडिचर फॉर्म्स. आप इसको कैसे देखते हैं कि फ्रॉम वेयर मनी कम्स एंड वेयर मनी गोस? राइट सर. तो लास्ट ईयर की तरह ही इस बार अगर हम देखें, सो वी चेक फर्स्ट इफ वी सी वेयर मनी कम्स फ्रॉम, तो सबसे ज्यादा पैसा जो आ रहा है वो इनकम टैक्स से आ रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स से. राइट. दैट इज अराउंड 22%. बट इसमें एक कैच है, क्योंकि अखबार में कभी कभी बच्चे ये पढ़ेंगे दैट द टैक्स इज मोर फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स, व्हिच मींस पीपल आर पेइंग मोर एंड कॉर्पोरेट्स आर पेइंग लेस. बट इन पर्सनल इनकम टैक्स आउट ऑफ 22%, around 4% is coming from STT. That is the security trading transactions tax. ये shares पे लगते हैं. So that is one. But anyways, 22% is the. और दूसरा इसमें एक कैच और भी है. There are many entities which are on proprietorship firm. Correct. जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो बेसिकली तो बिजनेस है, लेकिन वो आपने कोई कंपनी नहीं बना रखी है, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म पे अपनी ओनरशिप में पर्सनल इनकम टैक्स में ऐड हो रहा है. करेक्ट, वेरी करेक्ट सर. इनफैक्ट वेरी रिच प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन मूवी स्टार्स, इवन टीचर्स
उनके साथ भी है. And then second source that comes is GST, 18%. Third is corporate income tax, 17%. पर सर prelims के point से एक trick है, बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए. Borrowing is the largest source, otherwise 24%. So if the question is what is the source of income for the government, receipt, then borrowing. But what is the tax source for the government? Then personal income tax. Or expenditure. Sir, if you see the expenditure, again, government is spending a lot. Money goes to. Yes. So first students has to observe the options first, sir. Let's say there was a question, sir, previously, which of the tax contributes least to the government, sir. They mention only taxes. So if they are mentioning the taxes, they have to target the taxes. But if it's the expenditure right now, sir, the interest payments, that is a major component, that is the outstanding jo debt is, sir. So how much you are paying in the current year, that is interest payments, around, if you see the current budgets, around 20%, sir. But that is expenditure. But there is a whatever the central government collects the taxes, they are mandated by the finance commission, they have to give something the states also. That is called states devolution, sir, around 22%, sir. Then finance commission shares 8%. Then students should remember, sir, there is central sector scheme, centrally sponsored scheme. In centrally sector schemes, 100% funded by the central government. Centrally sponsored scheme, center plus states will fund together, sir. Now, if they ask you ascending order, descending order, what they can do, they should remember, central sector schemes, government spend more than centrally sponsored schemes, sir. So in centrally sponsored, they are spending 8%. Central sector, they are spending 16%, sir. Almost double. Like that, they can eliminate. In central sector, central government is funding 100%, sir. In centrally sponsored, center plus states will fund together. Then, sir, there is a pensions 4%, other expenditure 8%, defense 8%, and major subsidy 6%, sir. In major subsidies, food, fertilizers, LPG gas. These are 3 subsidies parts. सर इसमें मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ एक बच्चे का. उन्होंने पूछा कि net zero used by impossible trinity of net zero taken by the finance by the chief economic advisor yesterday. What does it mean? Chief economic advisor was saying yesterday that you cannot have sustainable fiscal deficit, high growth and net zero achievement together. You will have to balance it. अगर आपको high growth चाहिए, थोड़ा सा अपने climate पे balance करना पड़ेगा. और अगर climate को और हाई ग्रोथ दोनों चाहिए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ानी पड़ेगी. तो ये तीनों इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बन जाते हैं. दैट यू कैन नॉट हैव लेस फिस्कल डेफिसिट, हाई ग्रोथ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस आल्सो. जस्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन अभी रसनिया पूछ रहे हैं, ये हमारे इंटरव्यू के स्टूडेंट हैं, इनको मैं जानता हूं. इन्होंने पूछा दैट गवर्नमेंट्स टैक्स कलेक्शन विल फॉल बिकॉज ऑफ 1 लाख करोड़ रिडक्शन ऑन इनकम टैक्स. So अभी the tax collection is not falling. Income tax collection is projected to rise by another 3 lakh crore this year. Corporate tax collection is projected to rise because the country is growing. तो हमारा अभी जो बजट है इसमें फिस्कल डेफिसिट कम दिख रहा है 4.4%. So government has been able to manage the reduction in tax pretty well. In fact मुझे अच्छा लगा that they have focused first time on investment and income tax reductions, direct income tax, rather than on focusing on more subsidies and freebies. विभास जी, 2 aspects. एक तो ये कि there are many students who still have confusion on the income tax calculation. Right. So in your classroom session, this is beyond classroom session, and you are going to take a classroom session. Yes, we will. So when you are going to take the classroom session, what areas you will discuss, and whether you will clear this doubt also that students how they understand this tax regime, and also interview students, those who are going to face the UPSC interview 2024. So we have planned for you a budget session, classroom session. This is beyond classroom. A classroom session for budget on Monday at 9 o'clock and Tuesday again at 9 o'clock. 2 sessions we will take in which we will finish entire budget with complete unequivocation. Completely khatam karenge, sir. Everything will be explained, ranging from the meaning of the speech, tax changes that she has done, indirect taxes that she has changed, the futuristic program she has announced. Everything I will be covering in that. And दोस्तों ये सेशन होगा नेक्स्ट IAS के YouTube चैनल पर, ओपन टू ऑल. ओपन टू ऑल. एंड फ्राइडे को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का भी एक सेशन करेंगे विद द फोकस ऑन प्रीलिम्स, इंटरव्यू, ऑल द गाइडेंस. और इकोनॉमिक सर्वे के इंडिविजुअल चैप्टर्स का सेशन फिर उसके अगले वीक से मैं शुरू कर दूंगा. राइट. रेड्डी जी, कमिंग टू यू. इन दिस बजट व्हाट यू सी इज गुड फॉर द कॉमन पीपल एंड व्हाट इज मिसिंग? Sir, the number 1 is the up to 12 lakh income people, the tax relief is the biggest achievement, announcement, number 1. Number 2, sir, government is following fiscal consolidation, sir. So after the COVID,
after the FY21 onwards. Gradual every year, the fiscal deficit is declining. Number 2, positive. Number 3, continuity spending in capital expenditures. There are 3 positives, sir. But if it's a 3 major missing points in the current budget, sir, somewhere among the businessmen, there is a feeling, people says, what you call weaponization by the states, sir. It is a very harsh word. Even economic survey says it is the right time for deregulation, sir. So let's say there is a big businessman coming to a particular area. Other businessmen feel insecure. Oh, I should not enter there because there is a big player. If I will go there, I may not compete with him. So that is the number 1. They are unable to address, sir. Number 2, land acquisition, the labor law reforms, they didn't touch, unfortunately. It's the time, sir, all the state governments, labor law ministers should have like a GST council, labor council. They should discuss, they should implement as soon as possible labor reforms. Number 3, sir, even agriculture sector, sir. Government talk about agriculture, we want to reform. But how they reform, for that central state government support is required. For that center state has to coordinate each other, sir. These are 3 missing points. Vibhas ji, in your opinion, anything else which is missing, which Reddy ji has spoken beyond that? Yes, so he has covered most of the points. I'll just add few more. Sir, apart from tax benefits that they have given, I am also liking the tax compliance procedure and all simplification that they have introduced, which will go a long way in making economy a white economy. कम से कम it will not be punishing the honest taxpayer. तो जिसको हम tax terrorism कहते थे वो नहीं होगा, कम होगा. Second is that even though they have kept the focus on capital expenditure, the effective capital expenditure is 15 lakh crore. One of our students had asked what is meant by effective capital expenditure. That is total capital expenditure by the government, which is around 11 lakh 25,000 crore, plus the loans given by the central government to state government, grants, loans, etc. for capital expenditure, which is another 3 lakh 75,000 crore. So effective capital expenditure is 15 lakh crore. Tax का भी benefit दिया लोगों को. But still they have been able to control fiscal deficit to 4.4%, while the target was 4.5% for 2025-26. So that is the second thing I liked. And the third thing I liked was focus on MSME and focus on investment in agriculture rather than subsidies. Usually we see the budgets of 3 types. या तो balanced budget होते हैं, deficit budget होते हैं, surplus budget होते हैं. What is the category of the budget 25-20? Deficit budget. Because we are still having fiscal deficit. कभी इंडिया का कभी surplus budget होगा? हाँ, 1970s में 2 साल हुए थे surplus budget हमारे. हमारा मुश्किल है सर. We are a developing country. खर्चे बहुत हैं. सर एक चीज, लेकिन मैं एक चीज और डालूंगा कि 3 चीजों से मुझे निराशा भी हुई. निराशा तो ज्यादा strong word है, but I was a little dissatisfied. Number 1 was that we have not seen any major increase in expenditure on education and health. I think India needs to do that. कम से कम 4-5% खर्च करना होगा. Second is not being able to spend on government schemes like Jal Jeevan Mission. Last year we had budgeted 54,000 crore, but we could spend only 22,000 crore. But they have planned to cover all the villages by next 3 years. 3 years. But वही है sir, if we can't spend, but मैं वहाँ पर एक छूट दे सकता हूँ सरकार को, that last year was election year, so automatically people take time before they settle down in the office. तो ये हुआ होगा जरूर. और एक तीसरी चीज भी मुझे लगी जो हम और अच्छा कर सकते हैं, is improving on land acquisition reforms in India. अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो लेबर, लैंड, क्रेडिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनको ठीक करना होगा. I don't find anything big initiative for the employment. Yes. For any employment guarantee scheme or for any youth, our students in youth who are preparing, I don't find any major initiative which is targeted to Yes, last time they announced 2-3 things, but this time they did not. Sir, they might have continued this last year's schemes, employment linked scheme. Again, there is a drawback at the grassroots, sir. Still, there is execution challenges. Yes. बहुत सारे इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हैं. स्टिल देयर इज स्कोप टू डू फर्दर बेटर. स्टेट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस. हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे और काम करने की ज़रूरत भी है. दोस्तों, आप ये हलवा सेरेमनी का तो नाम सुना ही होगा. थोड़ा बात कर लेते हैं, हलवा सेरेमनी है क्या और क्यों होती है? बजट से पहले लोगों को सीक्रेसी के लिए दे गो एंड दे आर केप्ट अवे फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग देयर फैमिली. तो जिस दिन बजट प्रेजेंट होना होता है उस दिन हलवा बनता है. सब कुछ हो गया. हाँ, सब कुछ हो गया. अब आप बाहर निकले उस चेंबर से. So is it just the completion of the preparation of the budget? Preparation of the budget and halwa is tasted, and I am a halwa liker. Reddy ji is a biryani liker. It's like a signal, sir. Budget is ready. It's going to be printed or digitally formed. And it's like we have a tradition, no, sir. We start. तो बिरयानी बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट था या बजट बनाना ज़्यादा? Sir, it depends, sir. Who is preparing?
निर्मला सीतारमन के लिए बजट ज्यादा आसान है, बिरयानी टफ है, आपके लिए बिरयानी आसान है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो नंबर 1 इज यूएसए, इट इज बिलीव $30.33 ट्रिलियन। China is number 2, $19.53 trillion. Germany is number 3, $4.92 trillion. Japan is number 4, $4.38 trillion. And India is number 5 at present, $4.27 trillion. We very soon hope to cross $5 trillion economy. Number 6 is UK, 7th is France, 8th is Russia, 9th is Canada, and 10th is Italy. So with this, our discussion is over for the day. And as Vivasji already told that on Monday, means tomorrow, day after tomorrow, and on Tuesday, there will be specific sessions on YouTube for the UPSC prelims and mains examination and those who are appearing in interview. Yes, please. If somebody among you has asked a question here which we could not answer because of paucity of time, you can leave your questions in the comment section and we will answer those questions. This is a good point. If you want the document of the budget, not that which has been released by the government of India, that one which has been analyzed by the next IAS and with the all added points and some as per UPSC requirement, आप उसके लिए request कर सकते हैं, we will send you. Secondly, you can put your doubt in the budget session. How you liked this discussion, please also comment, और आपकी जो suggestions हो वो भी आप दीजिए. Next discussion किस topic पर सुनना चाहते हैं, if you suggest, we will be happy and we will